Hey there, congratulations on buying the book Onto Overthinking and helping yourself overcome the patterns of the same. Let's begin with the declutter activity. So what you have to do is, आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आप किसी समय पे या किसी पर्सन के साथ में होने के टाइम पे या कोई ऐसे सिचुएशन में आप होते हो जहां आप ओवरथिंक कर रहे हो, ट्राई टू आइसोलेट योरसेल्फ, grab a paper and a pen, write it down whatever you're thinking about. इसके बाद का प्रोसेस आई विल टेल यू इन अ वाइल. बट इन केस आप वो सिचुएशन पे नहीं हो जहां पे आप वो थॉट्स एक्सप्रेस कर सको किसी भी वे में, देन whenever you can isolate for at least 5 minutes, दिन में कोई भी टाइम पे. फॉर इंस्टेंस मैं ऑफिस में हूं, मुझे इस मूवमेंट पे ओवर थिंकिंग हो रही है, आई एम जस्ट, देयर आर थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स कमिंग इन माई माइंड, बट मैं कुछ भी कर नहीं पा रही हूं, तो मैं रात को आके, शाम को घर पे आके प्रोबेबली 5 मिनट्स निकालूंगी जहां पे मैं ये प्रोसेस करती हूँ ऑफ डिक्लटरिंग, so that I can vent out and I can let go of the process and have peaceful sleep. So in case you are the person जिनको बाद में ये process करना है, तो you have to make sure that you go ahead with this step that I'm going to make you do. Close your eyes, sit straight, back straight, your shoulder needs to be straight. Keep your palms downwards on the lap and concentrate on your breathing. Let's begin. It's just a moment of meditation, nothing much, just to take you to that situation, particular situation, जहां पे आप ये process करना start करते हो. Okay? If you're ready, make sure you have your pencil and your paper, pen or paper ready with you, near to you. And then you start with this process. Let's begin. Close your eyes. Neck straight, back straight, shoulder straight. Breathe. Breathe deeply. Breathe in from your nose. Breathe out from your mouth. Breathe in from your nose. Breathe out from your mouth. Breathe in from your nose. Breathe out from your mouth. Now, think of that situation which is triggering you, the person that is irritating you, the words that you might have spoken and you feel bad about. Whatever it is, what you overthink about, go into that time. It may be your night, your office, your relatives, wherever that thing happens. Go in that situation, go in that time. If you are in that situation, please open your eyes slowly, grab that paper, write down everything that comes to your mind. The detailed information only is going to help you. Please don't write anything in short. Write down each and every feeling of yours that you think is running in your mind. Pause the video if you think it's a long list. If you're done with that, done with your writing, now grab a fresh sheet of paper in your hand and now divide whatever you have written in your previous sheet. What you have to do here is, आप वो लिस्ट में से ऐसी चीजें चुनोगे जो आपके कंट्रोल में है. जो कंट्रोल में नहीं है, आप उसको वो शीट में छोड़ दोगे, आप उसको कहीं पे भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे. जैसे कि इसने मुझसे ऐसे बात क्यों की, अभी किसी का नेचर हमारे हैंड में नहीं होता है, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट स्टेटमेंट फ्रॉम देयर. शायद मैं अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकती थी, मेरा ऐसा प्रेजेंटेशन क्यों गया, दिस सिचुएशन इज अंडर माई कंट्रोल. मैंने ऐसे क्यों किया, दिस सिचुएशन इज अंडर माई कंट्रोल. मेरा तो नसीब ही खराब है, दिस सिचुएशन इज नॉट इन माई कंट्रोल. ओके, सो वॉट एवर यू थिंक जो आपके कंट्रोल में है या नहीं है उसको छोड़ देना है. जो आपके कंट्रोल में है, आप वो फ्रेश वाला जो पेज है सिर्फ उस पे लिखते जाएंगे. When you are done with that, pause the video if you would take time. When you are done with that, now tally both the sheets. हो सकता है आपके previous sheet में there would be around 10 such statements and आपके current sheet में सिर्फ एक ही statement हो या नहीं भी हो या फिर 4 से 5 statements हो. Now what you have to do is, जो previous वाला sheet था
tear it off, flush it. Or the best solution to it is burn it and let that smell come to your nose. This will give you immense satisfaction of just thinking कि जिस चीजों पे मैं टाइम बर्बाद कर रही थी, it is gone. All that process is now gone. I don't have to think. Yes, it's an normal method. You do it. जहाँ पे आपको किसी भी चीज को let go करना होता है. Let go of those things which are not under your control. Now, जो आपकी fresh sheet है, उस पे concentrate करो. Understand what all things you can work upon. हर चीज के लिए एक funnel बनाओ, एक planning करो, so that ये चीज बार बार hammering नहीं हो, and you can progress with all the patterns. Let go of all the things that is wasting your time and energy. Most importantly, I hope this helps. Get in touch with me on Wellness Coach Divya handle, that is DIVYAA Divya, on my Insta handle. Do DM me if you need one-on-one counseling. I do take one-on-one counseling. I do take group counseling as well. So depends what are your requirements. Get in touch if you need any further help on the same. Thank you all. See you back soon.